गुड मॉर्निंग पीपल। ये मेरा पहला दिन है अंतालिया में और आज मैं जाने वाली हूँ मायरा, केमरे और देमरे रून्स की साइड के टूर के लिए। तो मैंने अलानिया टूर्स चूज़ किया है और अभी मैं पिकअप पॉइंट की तरफ जा रही हूँ। तो अभी 6:30 बज रहे हैं। 6:30 से 6:30 शाम तक का टूर है। तो अच्छी क्या देखने को मिलता है। मॉर्निंग में से सब कुछ शांत पड़ा हुआ ये है बस। हम यहाँ पे एक और बंदे का वेट कर रहे हैं। देन वंस वो आ जाएंगे तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। ये जो रूम्स की साइड है वो कुछ 1-1.5 घंटा दूर है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो या अकेले जाने के लिए आपको मतलब गाड़ी चाहिए होगी, क्योंकि वरना इट्स वेरी मतलब डिफ़िकल्ट, क्योंकि पब्लिक बसेस ढूंढना उधर से फिर वापस, और फिर वहाँ पर टाइम भी मतलब अगर आपको स्पेंड करना है हर जगह, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाली जगह के लिए टूर यूज़ करो, क्योंकि बहुत सारे टूर पैकेजेस आपको मिलेंगे। और इसका कॉस्ट है कुछ 45 यूरोज़, जो 2500-2600 के अराउंड आता है। तो या बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब आफ्टर द टूर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा था, अगर आपको ये वाली कंपनी चूज़ करनी चाहिए कोई और वाली। तो या लेट्स गो। तो ये है प्रॉपर वाली बस जो लेके जाएगी। Gentlemen, dear children, good morning. Welcome on board. After a long morning, we are ready finally. From Alanya, from Side, from Union during the 5th and 6th centuries before Christ. Место а-ля Памукали. Это теплицы. Вы сами все увидите, потому что Кумлыджа занимается выращиванием. Mountains look so beautiful. Those are some random mountains, but yeah, और ये हमारा बस वही तो सिटी है पीछे, as you can see। स्टॉप करते हैं। ऑब्वियसली बहुत महंगी जगह है, बट यहाँ पे कुछ और ऑप्शन नहीं है खाने को, अगर आप नहीं लेके आओ ब्रेकफास्ट। This is the Turkish version of paratha. There was only orange color and green color. That's mean only orange trees, lemon trees, tangerine trees. But then they cut the trees down and they were building greenhouses from the iron, and then they covered by the plastic and by the glass. So that's why it looks like a bit white. अभी हम पेकोवा आइलैंड टूर के लिए आ गए हैं। तो पहले हम बोट पे जाएंगे, एंड प्लीज़ डू कीप इन माइंड के स्विमिंग सूट लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे वो स्विमिंग स्पॉट्स पे रोकते हैं। मैं भूल गई थी, मैंने ध्यान से देखा नहीं, तो आई हैव नथिंग। एंड यहाँ पे कहीं आई थिंक बेच भी नहीं रहे हैं, सो सैड फॉर मी, बट यस यू शुड ब्रिंग द बोट्स एंड लुक एट द वाटर, सो क्लियर। Clear water. This is our deck. Sunbathing.
here. Otherwise, big part of city on the other side, on the right side of us. This part of city for living area like homes and stores. By the way, here you are going to see this water system. But dating to the 2nd centuries after Christ, and there were many different rooms used as a dressing room, cold water room, warm water room, hot. Many others, but they're on the top of the hill, between the stones and between the bushes. This is the single one. Here is. Кто еще не переоделся, переодеваемся, готовимся к плаванию. Options. Shrimp will be fried. थोड़ा महंगा है बट अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। यहाँ पे वो आपको स्विम करने के लिए लेके आते हैं। यस, दिस इज वेरी यूनिक जो स्विम सूट जो मैं लाना भूल गई। ये सब यहाँ पे स्विम कर रहे हैं। You can go down. Я там стою, там еще теперь. Там еще ниже есть यहाँ पे पोर्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब हम मायरा की तरफ जाएंगे। तो अभी हम एक म्यूज़ियम जा रहे हैं और चर्च जा रहे हैं यहाँ पे। वी आर इन डेम्ब्रे नाउ। तो या लेट्स गो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस टूर इज़ कि इसमें आपकी एंट्री फी भी इंक्लूडेड है, तो आपको म्यूजियम्स की एंट्री फी अलग से नहीं देनी है, वही दिखाएंगे। Okay, so they go. You're going to see church name or museum or Santa Claus home. Please do not think you are going to see 3 different places. No, same place has 3 different names. First and the second, our meeting time will be 14:00 here in the church garden. After that, you'll see the people sitting there. On the right side, a small building has many rooms as a comfort room. That means toilets. WC. If anyone needs to go to toilets over there. On the left side, you are going to see small museum, religious gift store. They have all products from Greece for Christian people, for Orthodox Christian people, special products. म्यूजियम शॉप है। Ablacığım şunu 1 dakikalığına alıyorum. 65. You know what happened in this day?
St. Nicholas died here in Myra when he was 65 years old. When he was in alive, he was telling to his members and colleagues, he doesn't feel good, so he's going to die. He already felt it. And he advising to them, after he died, do not build a big construction like old temple style. Instead, make a small and simple size of the gravestone. After a few months, maybe he died. Exactly, they made a small marble stone of grave for him, for his funeral. If the corridor is open, I will try to show. This is Bible Nicholas, and he holds the Bible on the left hand. So the protection, all the goodness will come from God to Jesus, Bible, and Bible is in Nicholas' hand. He will give this goodness from his heart to you, and you will get from there. So that's why especially they touch to left side. Never forget, this is religious. How do you believe? How do you follow the ritual? It works like this. Before we go in, I will count that grave. But after they found, then you can have each other. They were giving the free hands. This corridor is free, please. If you go one step back, it will be easy and better for all of us. Room and praying room, because of the historical writers say that which grave we couldn't see. It was under this platform, and four legs. Come on, four legs on the corner side. And on the top you are going to see the marble stone. Yeah, looks like a man lying on the back side. The head side is broken. So that's why the Christian people are coming and wishing and praying. As you see, piece of papers and tickets. So they believe like this. Personal picture, personal letter, personal business card, or Mary, or Jesus, or Nicholas, Iconas, whatever. How do you say? Just come and wish here, and then keep these papers with you, or just throw there, or take to your home, take to your office for the future. So that's mean always and always God will help you, Jesus will help you, so you will be under religious protection. So that's why they come and visit this corner. Original marble stone looks like a square size, but our first attention can be this design. So that's cross, right? So we can understand this is symbolizing of the Christian religious, but you can come here so they can come in. Okay, let's this part. So remember from this morning? Anchor, right. So why cross and anchor together? Any idea? Yeah, okay. Because of this is handmade and special present from sailors to church members to priests. Why? Because of many times the shepherds, sailors stayed here days and weeks. Because of they have technical problems, they have health problems, and they couldn't leave from here to the next harbor, next city. While they were staying here, and for their education, religious education, for their meals, always and always church staff helped to them, and church staff gave extra foods and drinks them. So this was like thankful handmade stone from sailors to the church staff. Not of silver. Imagine that's your treasury, that's your diamond, that's your gold. Directing the George, Theodore, St. Philip, Basileus, Onipros, Onesimus, etc., etc. So like 2 millimeters. But later on, they used another beautiful lady, 12 apostles, and they decided to death penalty of this couple. And they call all the people who are living there on Sunday nearby the church, and they brought 2 full of snake in the baskets, and that man and woman stands in the hall,
and they open these baskets, all the snakes drop and bite these men and women and kill. Here, you got the message, huh? So that's mean don't do this. If you do this, according to God, Jesus, Bible rules, it's very bad. It's almost like killing, and you shouldn't make a example for the future. So that's mean that penalty. Yeah. Maybe the last one is This was St. Nicholas Church in Myra, और यहाँ पे पूरा रूम्स हो रखा है, मतलब obviously it's not used anymore as such, and but ये पुराने ज़माने में बहुत यूज़ होता था, बहुत इम्पोर्टेंस था इसका. तो हाँ, आप यहाँ पे आके इसके बारे में जान सकते हो अगर आपको जानना है तो. मुझे ये टूर वर्थ इट लग रहा है क्योंकि इसमें एंट्रेंस टिकट्स भी आपके इंक्लूडेड हैं, देन लंच भी है, एंड ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, प्लस गाइडेड टूर है, तो आपको हर जगह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड वही है कि कॉस्ट इसका 45 यूरोज़ है, विच कम्स अराउंड 3600 INR. तो हाँ, अभी तक तो सही लग रहा है. अभी आई थिंक लंच बचा है और मेन पॉइंट मायरा के रूम्स बचे हैं, तो वही दोनों मेन स्पॉट है. उसके बाद फिर आई थिंक हम वापस चले जाएंगे. तो या चर्च आया तो यहाँ पे वॉशरूम भी है पीछे, इधर फ्री वॉशरूम है, तो आप यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे थोड़ा खाने पीने का भी एरिया है, तो आप खा पी सकते हो. फिर हम मायरा सिटी आ चुके हैं, एंशिएंट रूम्स, और अभी हम अंदर जा रहे हैं. ज़्यादा ही धूप है, और ये लोग बोल रहे थे कि ये अभी 1 महीने के अंदर यहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्रीज हो जाएगा, और फिर उसके बाद 55 डिग्रीज. तो ये शॉपिंग का है, अगर आपको शॉपिंग करना है तो. दूर है, पहले हमारा ही होना चाहिए. 70 लीरा है, बट दैट्स इंक्लूडेड. keep our English speakers. हर जगह पे आपको 30 मिनट के राउंड मिलता है, तो या दैट्स ऑल. अब हम थोड़ा रूम्स देखेंगे. लेट्स गो. Looks like one of the amphitheaters is also. Office, whatever, but it's none of them is true. There is only one true way. That one spatial design, a special stone cutting by the human hands for the funerals. Yeah, and all these are cemetery graves for the rich people. I said to you, they made it before Christ, but there you are going to see cross sign. That means you are going to understand the Christian people use as well. That means after Christ, during the Roman and Byzantine, the 2nd centuries after Christ, the capacity was from 8,000 to 10,000 spectators. Okay, and here's the wall front of us, from the ground, like 24 meters high, and then inside there was a corridor for the staff and inner wall. From inner side, front of this, there were 5 doors were opening the stage platform. Stage platform designed like half moon, and it was 3 meters higher than ground floor. Why 3 meters? Because of they divided to 2 separate. So that's the cemetery जो पहले यूज़ होती थी basically. According to the guide, ये अमीर लोगों के लिए थी, तो हाँ. But इसका स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है, एंड अकॉर्डिंग टू द गाइड ये क्राइस्ट के टाइम से पहले से था. बट आप अगर इसको देखोगे तो आपको क्रॉस के सिंबल्स दिखेंगे फिर भी. तो गोइंग इनसाइड नाउ.
सब मार्बल्स बना हुआ है। So unique, right? हम लोग करते आर्किटेक्चर भाई साहब, मतलब माउंटेन के अंदर बना रखा है। यहाँ पे लंच है। Всем хватит места. सलाद, दैट वाज एन ऑल यू कैन ईट बुफे। तो ठीक था, मतलब आई वुडंट से बहुत अच्छा था, आई वुडंट से बहुत बुरा था, मतलब नॉर्मल था। एंड हाँ, मस्त अब पेट भर गया है। वापस जाके थोड़ी देर सोने वाली हूँ मैं। और मोस्टली यहीं पे हमारा टूर ख़त्म होता है, क्योंकि अब ये मुझे बस ड्रॉप करेंगे। तो या अगर आपको करना है ये टूर आप कर सकते हो, और भी कंपनीज हैं उनके साथ भी कर सकते हो, इनके साथ भी कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू। बट इट्स अ नाइस टूर, आई मीन स्पेशली अगर आप अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आओ, क्योंकि यू कैन एन्जॉय स्विम इन द वाटर एज वेल। तो येस, तो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी तो हमारे पास 2 दिन और हैं और मेरे को बहुत कुछ करना है अंटालिया में। बाकी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि मैं यहाँ पे शायद से डाइविंग करूँ, शायद से बोट ट्रिप करूँ, आई एम नॉट श्योर येट। बट यहाँ पे वाटरफॉल्स बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब देख सकते हो आप। तो वो मैं जब वीडियो निकालूंगी तो आप ऊपर देख लेना। बट येस, दैट्स मोस्टली इट। सो सब्सक्राइब।